डेविड, आपको यू विल हैव टू अलाउ अस टू शेयर वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग भी चालू कर दो। यस यस, वो स्लाइड दी है ना पहले, इसके लिए। ओके। ठीक है, 4 बज गए, शुरू करना है। ओके। गीतेश, शार्दुल, देवांग। देवांग ज्वाइन हो गए। वही देवांग के लिए रुके हैं। हेलो। यस। Hello, friends. Hello, everybody. हेलो, So, हाय। हेलो। uh, to all our friends, I would like to say कि हम लोग तो एक दूसरे से केसेस शेयर करते रहते हैं. We keep discussing things, we keep meeting. We also take live cases as a learning activity to see how each other, every one of us works. And we keep trying to upgrade ourselves. In such a simple talk, sometimes some new ideas come up, and we felt in one of those talks कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, this itself we should do live for many other people so that others also can learn. But we tried to do it with a rider कि भाई we'll do the discussions of cases first. So we want this activity to be an ongoing activity, और हम ट्राई करेंगे कि एवरी मंथ वील कम वंस लाइव और एक एक केस हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द प्लान. बट राइट नाउ, टुडे बीइंग द फर्स्ट सेशन, द इंट्रोडक्टरी सेशन, वी फेल्ट कि हम अपना जर्नी एक दूसरे से जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, वी शुड टेल अदर्स ऑल्सो, सो दैट जो हम में एक थोड़ा बहुत होम्योपैथी के लिए करने का जज्बा है, वो भी हम पास ऑन कर पाए. So, with that, I think we'll start with the journey, and I would like to start by asking Dr. Shardul कि डॉक्टर शार्दुल, हमको पता है कि यू केम फ्रॉम लेट्स से टियर 2 टियर 3 टाइप ऑफ सिटी, और वहां पे एज फार एज वी सी व्हेन वी गो टू टीच, वहां पे एक्सपोजर बहुत कम होता है. And that lack of exposure rather, is one of the main reasons क्यों वहां से इतने होम्योपैथ्स नहीं डेवलप होते हैं, या अगर होते भी है तो उनके क्वालिटी में थोड़ा बहुत ये क्यों होता है. और जब आप वो फेज में थे, व्हेन यू आर इन दैट फेज ऑफ लर्निंग एंड यू सॉ दिस सिचुएशन अराउंड यू, how did you overcome that, or from where did you find the motivation to keep going, to keep learning? That's my question, Dr. Shardul. Hello, everybody. So, what Dr. Gitesh is saying, usually, whenever we go to any lecture for any seminar, student tell us that, sir, our college is not in city. We are here in periphery, remote areas, and we don't have exposure or opportunities or the knowledge what you get there in big cities.
So that is one of the big reason we wanted to do homeopathy, but we could not do homeopathy. We could not pursue the career what we want. And this is what commonly we see, we hear, and I think everybody, we have must heard this from the students. Whenever we go to lecture, to seminar, and this is not about only students, it is about the doctors also. Many times doctors also, they come, they share as we did not get the right guidance at right time, so we could not follow, though we have desire to learn, but we could not do that. But if you see, some part of this is true. And when you compare with the opportunities, exposure we get in big cities, in compare with small places, small town, periphery, remote places, definitely there is difference. So we cannot deny the fact, right? And but I want to emphasis on that. It is not only about homeopathy. If you see, in every field, situation is the same. In smaller places, in the remote places, obviously opportunities will be less. But if you see, take any other field also, there are people who has come from the small places and become successful in their particular field. They have achieved success. So I want to emphasize, I want to see the other side of the coin. See what happens when there is scarcity of exposure, scarcity of resources, your hunger increases. When there is abundance, then you become little bit like taken for granted कि हाँ मिलने टुमारो वाला है, करेंगे, होने वाली कल चीज, कर लेंगे. right? But when there is scarcity, you will see there will be more hunger, more thirst for knowledge in the students, doctors coming from the small places, from the remote area. And actually, that I would say that was the one of the main force behind this journey. And I would Hunger. remember, yes, the hunger. And when there is scarcity, so it will be always more. When I started my homeopathic journey, when I was in second year, uh, I born and brought up in Srirampur. It is a small town in Maharashtra, and fortunately, I got my guru there. I was in second year. I wanted to learn homeopathy, and as all we know that homeopathy फर्स्ट चॉइस तो रहता नहीं किसी का, राइट? एक्सीडेंटली सब आते हैं होम्योपैथी को, राइट? तो आई वाज आल्सो एक्सीडेंटल होम्योपैथ, बट became homeopath by my choice. And I wanted to know about homeopathy, so I met my guru, Dr. Prashant Gangwal, and he very open heartedly allowed me to sit in clinic, to observe patient, to come. एंड वो देख के, वो उनका जेस्चर देख के, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. आई वॉन्टेड टू लर्न होम्योपैथी, आई वॉन्टेड टू बिकम लाइक हिम. तो सेकंड ईयर के वेकेशन में आई ज्वाइन हिज क्लिनिक फॉर फ्यू डेज. तब डिसाइड किया कि कभी भी मैं वेकेशन को आऊंगा या मेरे घर पे, कॉलेज के कोई भी समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, मुझे तो क्लिनिक करना है जाके. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, वेन एवर आई वुड कम टू माई होम टाउन फॉर वेकेशन, मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट, मैं पूरा दिन क्लिनिक पे रहता था सर के साथ में. एक भी दिन ऐसा नहीं लगता था अभी घर जाऊं, घर आया हूं छुट्टी को तो घर जाऊं, नहीं. वो ये डिजायर इतना था कि नहीं, कुछ करना है, सीखना है होम्योपैथी. So I used to go there. I used to see cases. I used to sit with him OPD. I used to see live cases, failures, result. जो भी सीखा वो ओपीडी में सीखा. वहां पे दिन रात वहीं पे पड़े रहते थे ओपीडी में, सर के क्लिनिक में. तो स्लोली स्लोली वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया. एंड आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर केस, माय फर्स्ट केस, एंड द केस स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग. I was in third year, just few months I have been observing sir, and एक patient आया. The patient was old man and he was not able to climb the stairs. सर का फर्स्ट फ्लोर पे था, few steps थे ऊपर चढ़ने के लिए, but he was not able to climb the stairs. तो उसको गाड़ी में लाया था. You must have remembered the old जीप रहते थे, ओपन जीप रहते थे वो. एंड उसमें पेशेंट में डाल के लाए, पेशेंट कमिंग फ्रॉम वेरी रिमोट रूरल एरिया. And he could not climb upstairs. Patient sir was seeing other patient, so sir
said me कि जा केस ले. आई वॉज शॉक्ड इनिशियली. केस लिए क्या करो नीचे जाके. पेशेंट और डिस्क्रिप्शन भी ऐसा कि पेशेंट इज लाइंग ऑन जीप और वो चढ़ नहीं सकता, ओल्ड पेशेंट. तो सर बोले आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो यू हैव सीन द केसेस, आई नो यू नो हाउ टू टेक केस, जस्ट गो एंड टेक वॉट एवर यू आर एबल टू टेक, जस्ट गो एंड टेक द केस, जितने सिम्टम मिलेंगे उतने. सो आई वेंट देयर, आई सैट, आई रिमेंबर दैट कंप्लीटली. आई कुड विजुअलाइज ऑल्सो. वो एक लाइट था, येलो लाइट, जीप में पेशेंट सामने सीट पे था, मैं इधर बैठा था, एंड आई वाज आस्किंग उसको जो भी था. कंप्लेन अभी भूल गया मैं, इतना डिटेल याद नहीं, बट that was the start. But he showed confidence on me. I could do something. कुछ जितने symptom लिए, case लिया, I went to sir, he encouraged me, and this is how I developed interest in homeopathy. I started learning. उसके बाद में मेरे classmate roommate थे, they also came with me. Now they are also they joined sir's clinic with me, so we used to go together sir's at sir's clinic. तो ऐसा था कि अभी जो वो दोनों भी है, they are also doing homeopathic practice, successful homeopathic practice in the small places. It is not like a big cities they are doing. So this, if early age में अगर तुमको ऐसा मिल जाता है डायरेक्शन, एनकरेजमेंट, तो हो जाता है, राइट. और जैसे मैंने बोला कि यू शुड हैव द हंगर, राइट. देयर इज सेइंग इन हिंदी, कुआं प्यासे के पास आता नहीं है, प्यासे को कुआं ढूंढना पड़ता है. तो इफ यू हैव हंगर, इफ यू हैव डिजायर टू लर्न, डेफिनेटली यू विल गेट गाइडेंस, यू विल गेट गुरु. तो वो होते जाता है. शार्दुल, डॉक्टर शार्दुल, ये प्यासे ने कुएं को ढूंढना कैसे, वो ही पूछ रहे हैं ना कि हाउ हाउ डू दे फाइंड अ गुड गुरु इन द रूरल प्लेसेस. आपको क्या, हाउ डिड यू गेट टू दैट गुरु के यू गॉट लकी, और कुछ ऐसा है जहां से दे कैन फाइंड वन? See, you have to look around. People are there to help you. I got lucky. वो एक चीज थी, but I went there. I approached him. I हाँ. spoke him. Right. So people are there now. Homeopathy has reached to the smaller places, to the rural area, remote areas. Also, I know people are doing. My friends, my colleagues, they are doing homeopathic practices, small town, and they are ready to teach. They are open. So if हाँ. students want, definitely, and I will tell you now, knowledge does not have restriction, does not have boundaries. Initially, if there is nobody to teach you, the online platform, digital platform is available. If somebody is really hungry to learn, they can, he or she can start with YouTube, with the lectures, with the Instagram channel. So many things are there. हम्म. Okay, good. I think just to take forward from what Gitesh had asked about, how to find. So I just remembered offhand that, I and Devang, we got inspired with homeopathy in our third year. And I remember I and Devang, we used to roam all over Pune city. Ki, please take us in your OPD, please take us in your OPD. But the biggest sort of surprise was in our college only we had quite a good number of OPDs. So, like Shardul said, I think we have to just look. And sometimes you may look at the wrong place. Sometimes you may not get the result that you want, even when you are looking around, searching around. But just the effort that you put in, no, something somewhere happens, and somewhere somebody will come and show you the direction. Yes, yes, yes. I agree. Effort डालोगे तो आएगा. आएगा, right. So, uh, that's what I would want our participants to, know that I know Dr. Shrikant since 2002, and I don't think many of our participants must be knowing that. And 2002 happens to be our first year of college. And we have shared the same bench, we have bunked the same lectures, and we have attended many OPDs together. हाँ, I think OPDs अटेंड किया ज्यादा बोल, बंक वंक वो ज्यादा सुनेंगे. to, to, to the extent that I remember, on Mondays we used to have Sunil Anand sir's OPD from 8 to 12. And after Sunil Anand sir, we used to have UC Kulkarni sir's OPD from 11 to 3 o'clock, 4 o'clock. So even without lunch, Full we have lunch. been attending the OPDs from 8 o'clock till 4 o'clock. And
In that has fact, been just one more thing, Devang. In fact, I remember even for our exams, we used to say that 2 घंटे prelim में एग्जाम exams. लिखने का है, 3 घंटे का, क्योंकि Yes, 12 बजे ओपीडी चालू होगा, 10 yes, to 12 में खत्म करना है, 1 तक नहीं लिखना है पेपर। yes, हाँ, वो हम and लोग धोनी के इतने जैसे ना, फीवर, बहुत हम लोग को मजा आता था एक्चुअली। आई थिंक द थिंग इज वी गॉट इंटरेस्टेड इन होम्योपैथी अ लॉट। वो धोनी के जैसे ना, पेपर 11 बजे के पहले खत्म करने का और प्रैक्टिस को पहुंचना है। हाँ, हाँ, यस, हाँ, वैसा हम भी तुमको। एमएस धोनी है, बराबर। So, uh, the side effect of attending the OPDs was such that we used to have the Materia Medica vivas and the Materia Medica paper. We never used to study in the third and the final year for Materia Medica, which we used to do for the first and the second year. Because whatever you see in the OPD, you remember the cases, and the side effect was that your study time was saved and you At least learned of a lot of materia medica, practical, at least for Materia repertory. Medica. Yeah. Hmm. So I vividly remember that, we would read Materia Medicas and question each other about some symptoms Right. and test the knowledge. So I used to ask him, I have read this symptom, which is the remedy? And he used to Ah, ask me. yes. And that's how we I used think the to, whole class got involved slowly. Hmm. that I don't remember. But Yes. Okay, So, few class members got involved. hmm. Okay, yeah. Right. अच्छा, cut हो गया. So you people were leaving the Materia Medica, not mugging up just. I think we were, because we used to attend OPDs. No, Right. it was live for us. Live. Materia So, medica but was like it yes, was living for us, it because became every live day for you you. listen. So what we used to do is, if a patient comes and if we have seen a particular patient today, so like Devang said, Monday we will see this many. So in Sunil Anand sir's OPD, we would see 20 patients. UCK sir's OPD, 20, 30 patients. Setia sir, Dore sir, Mahajan sir. So many OPDs we used to attend. Every day, at least 1, 2 OPD we used to attend. So what we used to do after every, we used to write notes, and every patient, why it is given, we used to ask, and we used to go and read in the Materia Medica. And we used to make sure that we complete it in that particular day or two. I think because of that, what happened is Materia Medica sort of became live for us. Live. And we could remember. That's a big problem that we have, no? That यार पढ़ो मटीरिया मेडिका, याद नहीं रहता, क्यों और पढ़ना? मैं यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिम्टम्स हम पढ़ते हैं लेकिन वो पेशेंट कैसे बोलेगा, हमको नहीं समझता। हाँ, हमारा वो Who will प्रॉब्लम pick था नहीं, back क्योंकि हम back? पेशेंट देख रहे थे। राइट, राइट। तो आई बट थिंक बट साथ में मुझे लग रहा है ये वही दिन में पढ़ने का, या टू हैव दैट मोटिवेशन टू फिनिश इट इन दैट डे इटसेल्फ, कि उतना पढ़ के होना चाहिए वो और होता टाइम है। भी निकालना चाहिए, क्योंकि हम, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स, बट बाकी थोड़ा बहुत टाइम पास तो होता ही है। दैट एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी कॉलेज डेज में, वो भी, अदरवाइज ये एज में तो नहीं मिलने वाला है वो। नहीं, तो जैसे मैंने बोला ना, गीतेश, पहले हमको मजा आता था, हम्म। हमको राइट। ये पढ़ने में ही मजा आने का लगा था। हमको ये आई क्या, थिंक आई थिंक कल दैट कल कोई तो पूछेगा, कल कोई तो पेशेंट ऐसे बोलेगा। और इंटरेस्टिंगली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, आफ्टर 2, 3, 4, 5 months, नो, जूनियर्स, सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दे वुड कम, दे वुड आस्क, सर वो मेरे को ये सर्दी है, दवा दे सकते हैं क्या? वो हम लोग को वो एक बहुत मोटिवेशन होता है। जब आप क्या बोलते हैं, आप ऐसे, आपको लोग देखते हैं, और ये लोग बहुत ओपीडी करते हैं, बहुत पेशेंट देखते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इनको मटीरियल अमेरिका बहुत आता है, तो बहुत लोग आते हैं ना आपके आसपास, इस दवा तो दे दो एटलीस्ट। तो वो जो किक रहता है ना, कोई आके दवा मांग रहा है, अभी इसको दवा दे के उसको ठीक करने का, कल सुबह सुनने का कि मैं ठीक हूं, वो किक आपको जिंदा रखता है। दैट विल मेक यू वर्क। I think people should get that flavor ki how do I, firstly develop that reputation. So for that, like Dr. Shardul said, put in the hard work, research, do OPDs, etc. But then you will start getting motivations like this. Relatives ask, friends ask, colleagues ask, और उनको ठीक करने के लिए जो मेहनत करने का मन करता है, उधर से आता है सब मोटिवेशन। फिर आपको लगता है और पढ़ूं और पढ़ूं, और किसी ने गलती से बोल दिया ठीक हो गया, तो और पढ़ने का मन करता है। मैं वही बोल रहा था, आई नो यू यूज्ड टू स्टडी राइट इन द मॉर्निंग 4 AM।
Yeah, वो जो मेहनत करूं वाला ये था. I remember one of the patients you had walked some 5 kilometers or 7 kilometers just to give the medicine. हाँ, वो सब बाद में, मतलब हाँ कॉलेज खत्म हो गया तो हाँ. मैंने ओपीडी चालू किया. मेरे को ऐसा लगता था कि अपन इतने, फ्रॉम थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर और इंटर्नशिप फॉर 3 years, इफ आई एम सीइंग अराउंड 300 पेशेंट्स पर डे, आई यूज टू फील अभी तो थ्री क्या हंड्रेड क्लिनिक, पर डे. पर नहीं नहीं, पर वीक, सॉरी, हाँ, पर मैं वीक. हाँ. 300 पर वीक. सो वो एक जब मैंने ओपीडी स्टार्ट किया ना, तब मुझको ऐसा लगता था क्या अभी तो अपने को आता है, अपन बैठेंगे, पेशेंट आएंगे, अपन दवा देंगे, पेशेंट ठीक होंगे. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. हम्म. वो फेलियर्स आने लग गए. हम्म. और फेलियर्स आने की वजह से जो मैं बोला ना, एक किक रहता था, एक मोटिवेशन, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगा ओपीडी डालने के बाद. वो ऐसे आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड गेटिंग डिप्रेस, सैड. हम्म. और बट देयर वाज ऑलवेज दिस यू नो ट्रस्ट दैट आई कुड सी इन अदर्स लाइक कॉलीग्स, फ्रेंड्स, कि इतना मेहनत किया है तो यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट इट. तो मुझको ऐसा लगता था फिर ठीक है, अपन ने अपने स्किल पे ही और काम करना है. सो आई यूज टू टेक मोर एफर्ट इन केस टेकिंग, मोर एफर्ट इन स्टडिंग, मोर एफर्ट इन repertorizing. Or that time we used to learn sensation method a lot, so put more and more effort to take deeper and deeper cases. So ऐसे सब की वजह से वो स्टार्ट हुआ, वो 4 AM उठना. तो ऐसे ऐसे लगता था कि थोड़ा नियम लाएंगे, इफ वी ब्रिंग डिसिप्लिन, मे बी आई एम मिसिंग डिसिप्लिन, ऐसा लगता था. उसके लिए नहीं आ रहे हैं पेशेंट्स या ये. बट लोग ऐसे भी बोलते थे कि एक ही साल हुआ प्रैक्टिस डाल के, 3-4 साल लगेगा. बट मुझको ऐसा लगता, मैं तो भारी हूं, मैं तो इतना पढ़ के आया हूँ, इतना, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता. ये दूसरों के साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता. ये मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग था कि दूसरे, ठीक है ना, दूसरों ने इतना मेरे जितना किया नहीं, मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता. वो मेरे को बहुत पुश करता था कि कुछ भी कर श्रीकांत, ठीक करना है, ठीक होना है, और ये सक्सेसफुल बनना है. और नाउ आई टेल इन लेक्चर दैट ईएमआई भरना है. लो, तभी मेरा क्लिनिक रेंट पे था कि रेंट भरना है, वो भगाता है ना आपको, रेंट बिगेस्ट भरना है, ईएमआई भरना है. तो थिंग्स लाइक दिस, लाइफ हैपन्स, एंड यू स्टार्ट गेटिंग कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल ही जाता है. Yeah. So to move forward, I think Devang has joined back. So then, Devang, you want to add anything to what we have been discussing? I Otherwise, I think would. yes. Huh. Basically, the biggest teachers for any doctor or any profession or any homeopath is the patient. Ultimately, whatever you read and you put that in action, and if it does not improve, then you are all the more motivated to see that how can I make this person better. Better. Yeah. So there is no bigger opportunity than the patient. Like I remember we in college, we used to, be very open. Every mama and every, peon in the college used to know that these people will take the case any time of the day, call them anytime, That and it was. will be done for free. So we used to kind of, search for opportunity ki whoever is sick, let's take the case, prescribe and see what happens. So that And one more curiosity thing, is Devang, I strong. would like to add is not just giving medicine for free, but being willing to come and see the patient anytime. जो वो Hmm. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देवांग ने बोला कि हम लोग को रात को 12 बजे भी वो लोग को मालूम था, फोन कर सकते हैं इनको, और ये लोग उठाएंगे, कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देंगे. खुद का पेशेंट देखना, खुद रिजल्ट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड स्पेशली इनिशियल डेज, कि मैंने ठीक किया, मेरा पेशेंट है, मैंने दवा दी. तो Yes. ये कॉन्फिडेंस बहुत, बट इसके लिए अगेन कि प्रैक्टिस तो करना बहुत. पड़ेगा, हाँ, पेशेंट देखना पड़ेगा. पेशेंट देखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा. तो जैसे अभी गितेश है, ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कोर्सेस. ही यूज्ड टू, आई नो, व्हेन ही वाज इन इंटर्नशिप ही डिड आईसीआर. आफ्टर इंटर्नशिप ही डिड सेंसेशन. देन आफ्टर सेंसेशन ही डिड विजयकर्स. सो उसने कोई स्कूल छोड़ा नहीं हमारे टाइम पेपर पे. थियरी फिर बाद किया. में उसने सेगल्स भी किया.
फिर बाद में उसने अभी नया नया थ्योरी सीख रहा है, वो हैमर्स थ्योरी, माइंड बॉडी कनेक्शन, ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहता है. सी, वन इज materia medica knowledge, another is having conceptual, inclination, and I felt Gitesh was more inclined towards हाँ, conceptual learning, etc. So my कॉन्सेप्चुअल. question, my question to you, Gitesh, is this: that why do you feel concept was more easier for you than facts, than reading materia medica and things like this? And didn't you feel you will get confused by learning so many concepts? ओके, सो कॉन्सेप्चुअल मेरे लिए हमेशा इजी था भाई. राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ मैंने पूरा ऑर्गेनॉन पढ़ लिया था, ऑल 291 अफोरिज्म्स एवरीवेयर, इवन इफ इट वाज केंट्स और बोनिंगहॉजन्स. जब वो रेपर्टरी पे आया, कॉन्सेप्चुअल वाज ऑलवेज इजियर फॉर मी. और बोगर का आई रिमेम्बर वन. Just if one minute, Gitesh. I think the point we are trying to highlight here is ultimately we have to find our inclination. एब्सोल्युटली. So I may like to read Materia Medica, but Gitesh likes to do it in a conceptual way. So like Absolutely. that, I think each one of us will have to find our own sort of inclination Yes, and yes, disposition, and then put our efforts there. Yeah, yes. please, Gitesh. तो Sorry. मैंने यही बोला कि कॉन्सेप्ट वाज ऑलवेज इजी. आई रिमेम्बर वन ऑफ द थिंग्स बीबीसीआर के इंट्रोडक्शन में बोगर राइट्स समथिंग अबाउट एंटीडोटिंग अ रेमेडी विद द सेम रेमेडी. और वो बहुत लोगों को समझा नहीं है ऐसे मुझे लगता है, बट वो चीज पे ही फोकस जाना, दैट वाज हाउ आई वाज मेड. तो सो तेरे को क्या समझा उसमें से? that a remedy can be used as an antidote to the same remedy in a lower potency. जब उसका डोज ज्यादा रहता है तब वो एंटीडोट की तरह काम करता है, ऐसा वहां पे दिया हुआ है बोगर ने. सो So coffee के जगह पे Boger is saying this नहीं instead of नहीं, strong कॉफी की coffee, जगह नहीं etc. नहीं नहीं नहीं, एंटीडोट यूज करने की जगह के, इफ लेट्स से एंटीडोट फॉर नाइट्रम्यूर इज सम रेमेडी, Epis तो में वो लिखे. रेमेडी, हाँ, एपिस यूज करने की जगह नाइट्रम्यूर ही यूज करो इन अ लोअर पोटेंसी. Lower potency. That's what he says over there. So in general, concepts was easier for me. And when I came to internship, I knew one more thing about myself कि मुझे पूरा देखना है. मेन्यू कार्ड का सब कुछ मालूम रहेगा तब तो मैं सोचूं मुझे क्या पसंद है और क्या करना है. मसाला डोसा खाना है या मैसूर डोसा? So I did ICR also. I was with Sunilanand sir also. I was with Karkare sir also, who used to practice ICR, yes, but backflower भी करते. तो आई वॉज लर्निंग मेनी थिंग्स एंड आई रियलाइज कि नहीं, इसमें ये अच्छा लग रहा है, उसमें वो अच्छा लग रहा है, उसमें वो अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल आई एम फीलिंग कि नहीं, इसमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ आनंद सर के साथ. जो मैं सीख रहा हूँ, अलग अलग रेमेडीज देना, चाहे रेयर हो रेमेडी, चाहे मुझे पता नहीं हो रेमेडी, लेकिन वो स्ट्रक्चर अगर मैं फॉलो करता हूं तो आई कैन रीच अ रेयर रेमेडी ऑल्सो. ये मुझे पसंद आया, देन आई केप्ट फॉलोइंग दैट. बट देन आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट कि हाँ, ये ठीक ठीक जम रहा है, नाउ आई शुड लर्न समथिंग मोर, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर विजय कर्स कोर्स. तो वहां जाने के बाद उनका मायाजम का आइडिया, उनका ये सब अलग अलग आइडियाज सीखने से, कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन कि कंफ्यूजन नहीं होता है क्या, आई फील इट वर्क्स आउट इजीली, स्मूथली, व्हेन यू सी एवरी पेशेंट इंडिविजुअली. नो, हर पेशेंट नया है तो किसी केस में तुमको सहगल टाइप माइजम दिखेगा, किसी का में ही काम में आने संस्कृत. वाला है, किसी में तुमको वो फॉलोअप में मायाजम का क्लियरली समझ में आने वाला है. इट कीप्स वर्किंग आउट इजीली, केस बाय केस. तो ज्यादा कॉन्सेप्ट पता होने से कंफ्यूजन नहीं होता है, इनफैक्ट इट बिकम्स, You have more instruments. हाँ, यू गेट मोर इंस्ट्रूमेंट्स, मोर टूल्स इन योर रेपर्टोयर. तो it becomes easier and it becomes much smoother. Practice is much easier with more concepts. I और think वो still बोलते हैं Gitesh कि ऐसा योर आई सीज व्हाट योर ब्रेन नोज. तुमको हाँ, कंसेप्ट ही पता नहीं तो तुमको दिखेगा भी नहीं. व्हेन यू नो मोर थिंग्स यू कुड डिफरेंट अप्रोच केस डिफरेंटली. और आई absolutely. नो कि गितेश का व्हाट ही वाज लर्निंग बॉडी माइंड रिलेशन, एंड आई रिमेंबर इन माय वन केस दैट
I was not getting cause in the case, but with I sat with the Gitesh, I discussed the case. He said कि अरे इधर प्रॉब्लम हो सकता है तू पूछ, and I it was my surprise कि उधर ही बट कॉल क्या था, मिला। तेरे को याद है क्या एग्जैक्ट? वो केस बिकॉज ऐसा था, ऐसा इट वाज थोड़ा, द हाँ केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। इन शॉर्ट आई विल जस्ट टेल इन नटशेल। वो हाँ हाँ, ब्रेन ट्यूमर था, दैट यंग गर्ल डेवलप्ड द ब्रेन ट्यूमर एंड शी वाज ऑन स्टेरॉइड्स, शी became paralyzed because of that. It was the benign tumor and it was increasing in size. So I was not getting cause so much of big pathology where from where it came. Gitesh just said, "Are it is the head, na? So there must be problem with the head of family." सो आई सेड कि यार, मैंने पूछा फादर बिदर के साथ क्या है, कुछ इशू है क्या? तो वो नहीं बोली कुछ नहीं है, फादर तो घर पे है, वो भी क्रॉनिकली इल है। तो ही सेड नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फादर हमेशा हेड होने चाहिए फैमिली के। उसको पूछ कि फैमिली का डिसीजन कौन लेता है, हु इज द एक्चुअल हेड। तो जब मैंने उसको ऐसा डायरेक्टली पूछा, शी सेड माई मदर इज एक्चुअली द हेड ऑफ द फैमिली। एंड जब उसको ये ट्यूमर हुआ, मदर के साथ उसका झगड़ा हुआ था जस्ट 2 months बैक। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसने मदर के साथ बोलना बंद किया, एंड देन शी डेवलप्ड द फीवर, एंड दे लेटर ऑन फाउंड आउट दैट शी हैज अ बिग ट्यूमर। सो आई तब थिंक तक दिस तो इज मुझे हैमर्स थियरी, नो कि हैमर्स थ्योरी। हेड इज, Okay, yes. तो ये तो गितेश वॉज सेवियर दैट टाइम, राइट? बिकॉज ही लर्न ऑल दिस थियरीज, तो अपने को वो हेल्प कर सकता है। सो दिस इज हाउ वी डिफिकल्ट केसेस सॉल्व, वी डिस्कस विथ ईच अदर, वी सिट इन अ केस। अगर श्रीकांत का, गितेश का, देवांग का, किसी का भी हमारा केस अगर स्टकअप है, तो हम पेशेंट को हम पैनल डिस्कशन करते, केसेस डिस्कस करते। तो ये भी एक है कि डिस्कशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एक्चुअल लर्निंग इज व्हेन यू ग्रुप, डिस्कस आई विद थिंक, अदर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है ग्रुप में रहना, कि यू विल हैव पॉजिटिव गुड डेज, बैड डेज, बट आई थिंक बीइंग इन अ ग्रुप रियली हेल्प्स. when you have a bad day, people will lift you. When you have a good day, they will bring you back. Both are Maybe they will equally pull your important. leg also, but they will motivate हाँ, also. yes, So having good whatever is friend is, needed, SOS basis पे जो आपको जरूरत है वो मिल जाता है उधर. yes, yes. So अभी ये स्टक केसेस पे आया, तो मैं आई वुड लाइक टू आस्क देवांग, बहुत ही Arjun, शांत wait शांत a बैठे। minute. Before that, somebody is asking you a question. What was the remedy given in that case of ये a इग्नेशिया दिया था, तो डिटेल तो पूरा बताएंगे केस में व्हेन वी गेट अ चांस। Yes, yes. Now you can ask. You were asking Okay, something. so for me, Devang is one of the most practical homeopath. ऐसा मुझे लगता है, because for him Simple. result only I matters। कुछ think, भी करो, हाँ, पेशेंट को रिजल्ट आना चाहिए। Gitesh, if Gitesh is conceptual, Devang is simple, more factual. मोर फैक्ट, मोर सिंपल। और व्हाट आई हाँ. लाइक द उसका ये जो क्वालिटी है कि रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को रिजल्ट देना है। तो मेनी टाइम्स वी सी, और हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि वी टेक अ केस, वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, घंटा घंटा भर केस लेते हैं, एंड देन पेशेंट को रिजल्ट आता नहीं, या पेशेंट स्टक हो जाता है बीच में, वी समझता नहीं अभी क्या करना है, ए फेल्यूर्स भाई, आते ऐसा हैं। मैसेज नहीं जा रहा ना अपने पास रिजल्ट नहीं है. सब लोग नहीं बोल नहीं, रहे रिजल्ट कुछ नहीं कुछ केसेस में। है. तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फेलियर केसेस. हमारे फेल्यूर पास जो केसेस, होते हैं यस। अच्छा ठीक भी होते So हैं. when we लोग का experience बात. few failures, so यस, फेलियर्स. so usually I would like to ask Devang कि what is his approach? वो क्या करता है ऐसे situation में? How he deals the failures So, in homeopathic practice, Dr. Sivan? so see, I would like to answer this in three phases of whatever homeopathy I have been through. Firstly, when I got inclined to practice homeopathy, let me tell you that my temperament is such that I like to do things in an easy way. Okay, I don't like to complicate things. So when I was, inclined towards homeopathy, I thought that, okay, if a patient of musculoskeletal problem comes, you mix arnica, rustox, ruta, calcarea, first give, and whichever remedy has to act will act. Not allowed, Git. Devang, this is not. So then what used to happen? Just joking. Yeah. I used to give the remedies to patients and all that. Hmm. And some only used to get better. And many patients used to come and say that I am not better. Now, as we started our discussion, that we did not like to hear this idea that the patient says that I am not better. That was something that, uh, that did not really Motivate. go well with my kind of personality. As you said, that the result matters. At that time,
we got in touch with Sunil Anand sir and UCK sir and Sethia sir. So then we realized the importance of taking a detailed case. Then Sunil Anand sir guided us to go to HRC, which later on became the other song. So in the second phase, where I got associated with the other song, I had an I was fortunate and got an opportunity to learn with the renowned homeopaths, and I saw how they are taking the cases, and I then my focus shifted to refining and fine tune the aspects of sensation homeopathy. And I was a resident to Dr. Jayesha sir, Dinesh Chauhan sir, Gajanan sir, and Sachindra sir and Bhavisha ma'am. And it was my belief, it is not something that has been taught, but I thought that you have found the constitutional remedy. Now whatever acute comes, you repeat the constitutional medicine and everything will be taken care of, whether it is cold, cough, stomach pain, or the chronic problem. In some cases it used to be helpful, but in majority of the cases, because I had to handle the acutes, patients used to come and tell me, doctor, not better. And the kind of patients that we used to deal here in Mumbai were very demanding, and they wanted results in 1 day, 2 days, and 3 days. So Fast enough, Mumbai. that was my second phase of learning, where fortunately Shankaran sir had invited Dr. Heiner Fry sir. Now no one knew Dr. Heiner Fry sir in 2015. He is not a person who will come on the internet and he will show seminars and show cases and all that. But I happened to attend his lecture, and what really impressed me about his lecture was, he says that I have seen 100 acutes in my practice, and out of the 100, 87 point something got better, or 84 point something got better. Now, in my entire 20 years of practice, I have not seen any homeopath who can come with statistics that this much I have seen, this is better and this is not better. And at that time, my difficulty, of course, was to how to deal with acutes. So then I learned his method. I happened to go to his clinic twice, and I sat with him, because sometimes, seminars are a little, virtual world is sometimes a little, you have to take it with a pinch of salt. But actually sitting with the doctor there and seeing what is he doing, and relating what is he saying and what's happening in the clinic, I realized that's the best way to learn. So then I got the confidence to deal with the acutes. So this was my second phase where COVID came, and I had this wonderful tool with me, polarity analysis, and I managed COVID quite successfully using this. Then what happened was, I found difficulty in treating cases like skin diseases like psoriasis, eczema, urticarias, metabolic diseases like hypothyroid and PCOD. And in my mind, constantly the search was going that how will I, deal with such cases? Because in polarity analysis, management of skin cases is a limitation. So then at that point of time, universe kind of plugged me to Dr. Saptarshi Banerjee, Subrata Banerjee sir, and I happened to attend first of their clinical course in 2024. And again, what really impressed me was that I saw around 160 cases, and how they were dealing and using simple case taking method and simple way of treating the cases. So then I happen to go every year. Now, many times some of my friends ask that why do you go every year? Because what happens typically, that over a period of 1 year, there are cases that don't do well, and that causes kind of disappointment and disheartening, results. So when I go there and I come back, I come back with a lot of motivation and lot of enthusiasm. And also one more Knowledge. teacher that I got exposed to was Dr. Naveen Singh sir. I met him, and just 2 hours of his lecture, I was so impressed that I happened to read the entire organon when my flight was delayed by 3 to 4 hours. So meeting different stalwarts in different parts of India itself gives a kind of energy, motivation to come back and, again re-evaluate your failures and see what was missing in the cases. So that is how my journey has been so far.
In spite of these, there are failures. And at such times, what I do is I schedule an appointment with colleagues like you all or friends that I have made in Calcutta, like Dr. Saurav is one, then Dr. Ranjan Belsare is one of a very good homeopath and a good human being. And I'm reminded that one case I was struggling with was of dermatographic urticaria. And I had given sulfur and aconite and carcinosin, it was not better. And that patient used to always say that whenever I go to a foreign trip or abroad or anywhere in India, I go to the spa and I get a massage done. And again, I have this urticaria which is very itchy. So my friend Dr. Ranjan said, Sir, usko Bovista 10 m 50 m de do, bas uske baad there is no need to give anything. And believe me, it's more than 2 years. She has not come back to me with any such problems. But Likewise, बोविस्टा क्यों दिया इंडिकेशन? pressure urticaria. Okay. प्रेशर अर्टिकेरिया Yes, ऐसा सिम्टम है उसका? that is a keynote symptom of Bovista. So either you refer it to one of the colleagues, or maybe, like, I remember one case I was not able to crack. This man had a weird fear of traveling in open expressways. So whenever he had to travel on an expressway, he used to get very scared and he used to cancel his trips, or he used to either take a train or something like that. We have So I seen this, I think. yeah. So I put this case, I told my friends like Dr. Shrikant, Shardul, and Geetesh that I'm struggling with this case. I'm not able to, help him. So we came together, we did his case in detail. One of the doctors suggested Calcarea carb, another suggested Calcarea nitricum. And because nitricums are much more known for panic and all that, I decided to give him Calcarea nitricum. And within the first dose, he said that I'm 25% better and later 50% better. Now he doesn't even come to me for the treatment. Unfortunately, the side effect is that the patient stopped coming. No, but they refer. I think Ah, no, yeah, I'm just when joking. patient So gets I'm better, just yeah, they joking. don't come, but I feel that they refer, Of Yes, and course, of course. good work is always appreciated. I think. yes. No, I'm just joking. It's Uh, absolutely fine. The whole aim is that the patient should say that I am better. yes. So I will summarize this in three parts again. First is for failures, you need to learn. Second is I refer it to colleague or a panel that we do. And third is, of course, to go to different teachers and see what's happening and, open your horizon and really get yourself exposed like my friend Dr. Geetesh has also done, and integrate it at a certain point of time. So this is how I deal with failures. Yeah, I think we are beyond time. Just to नहीं, summarize. हाँ तो summarize, I was just going to do that. कि Yes. to summarize, I think what each of us is saying कि भाई हमने तो सीखा हमारे टीचर के साथ बैठ के, या अगर कभी वो कम भी पड़ा तो किसी और टीचर के साथ बैठ के उनके केसेस से सीखा. I think that's what each of us is saying, and that is most important kind of learning that we should be doing. एंड इंसिडेंटली ये भी हो रहा है कि यहाँ पे जब हम ये सेशन कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट 10 days वी आर स्टार्टिंग विद सच अ कोर्स वेयर वी आर सीइंग लाइव केसेस. लाइव केस बेस्ड वर्कशॉप एक प्राणा में होने वाला है. दिस इज एन ऑफलाइन कोर्स. यहाँ पे यू विल बी गिवन 4 days ऑफ लेक्चर्स जिसमें थोड़ा बहुत केस टेकिंग, एनालिसिस, इवेल्युएशन, मटीरिया मेडिका, रेपर्टाइजेशन, ये सब करेंगे. But it will be live cases, one in the morning, one in the afternoon, day in and day out for those 2 weeks. You will be full of learning. So I think this is a very good opportunity to learn, to experience what each of us is doing in our clinics. And also there is a thing where we form a group और वहां पे follow-ups भी भेजे जाते हैं. So it's a very good opportunity to learn, and I would urge each of you to come and join us in this workshop. We are starting on the 16th of March, and it will be for 2 weeks. It will end on 28th of March, and it will be full day, 10 a.m. to 5 p.m. at Prana, offline only. Yeah, and it is subsidized by And Bajaj CSR. yeah, and I think most important thing is the live cases.
where you firstly see the whole life case taking process, but before that you are taught how we are going to take the case, what we are going to see, how we are going to see, how we are going to analyze, which symptom to pick, which to leave, why to leave, when to leave, which to hold on to, which to repertorize, which to use for sensation, which to use for miasm, which to use for um, potency, management, posology, auxiliary. Every single thing is taught. And each of this is done for every single Yes. patient. So we really feel, I think you can go to YouTube and look at the feedback also, the testimonials for this course. You will really enjoy. We promise you it will be a life-changing experience for anybody who will come, whether junior, whether senior, because it is live case. Don't think that it is just for beginners. No, it is live case. So every case is important. Some of you who have done previously also can do it. Thank you. Yes, thank you, everybody. Thank you. So let's conclude today's session. Yeah. 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 Okay. I hope all of you enjoyed. But Gitesh, by chance, if there are any questions, And yes, just Gitesh, check. one more Just thing to any remind. questions. Just we are going to continue these kind of sessions, coming online, discussing together. Yes, Yes. yes, yes. This is not just one off. We hope and we will try our best to come. And from next time, we'll share more of our cases. No, Homeopathy, more homeopathy. like massage urticaria is Bovista. No, Pressure good. urticaria. हाँ, massage urticaria. Okay. अपना अपना नजरिया. Okay. Chalo. Okay, everyone. Chalo, Chalo. bye, bye, Thank everybody. Bye. you.